जाएगा वेटिंग फ्लूइड एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड। All right, so what is the sense of wetting fluid? जो सरफेस को वेट कर रहे हैं सिंपली, राइट। नॉन वेटिंग मीन्स जो वेट नहीं कर रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कोहेशन एंड एडिसिव फोर्सेस वी कैन डिफाइन देम। दैट फर्स्ट इफ वी आर टेकिंग द वेटिंग फ्लूइड, so means when we are saying a fluid is a wetting fluid, that means the adhesive forces are stronger, right, like water. But consider this one, consider this is the solid surface, and over this one there is a drop of water, initial contact. All right, now in this case the cohesive force is smaller, and this is the adhesive force, Fa. So now means, as for wetting fluids, adhesive force is stronger than cohesive force. That's why these two molecules will try to attack itself more. Alright, that's why this whole fluid will try to spread over the solid surface slowly. Alright, क्योंकि ये आपके से दोनों molecules हैं, जिनमें इतना sufficient force नहीं है कि अपने आप को hold रख सकें, क्योंकि ये force क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या नहीं कोशिश करेंगे, क्लोज आने की कोशिश करेंगे। राइट, तो स्लोली आप कैसे क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा इस पे, इट टेक्स ए फॉर्म लाइक दिस वन, देन फाइनली इट लुक लाइक दिस वन। राइट, क्यों? बिकॉज adhesive forces आर स्ट्रॉन्गर. So when the adhesive forces are stronger, then the fluid is known as wetting fluids. Now one more thing, this is the property, this is the property. For the wetting fluid, this is the property here. We are defining that is in case of wetting fluids, the adhesive forces are stronger than cohesive forces. This is happening. Alright, now let if I am taking an angle between the solid surface and let I am drawing a tangent here to this curve, and I am taking inside angle, and I am saying theta. This theta is known as angle of contact. Alright, and for the wetting fluid it is true that its angle of contact will always be less than 90 degree. Yes. Alright, means for the wetting fluid theta will always be less than, and even in case of clean water, sorry, that is pure water and clean glass, the angle almost approaches to zero. अगर आपके पास कोई ग्लास है तो वो क्लीन ग्लास है, प्योर वाटर मीन्स देयर इज नो सॉल्ट, नो मिनरल्स, इन दैट केस द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास विल अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो. वो क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट शो होगा आपको. राइट, सो राइट ऑन द डेफिनेशन फर्स्ट फॉर द वेटिंग फ्लूइड्स. वेटिंग फ्लूइड्स क्या, इन केस ऑफ वेटिंग फ्लूइड्स, in case of wetting fluids, the adhesive forces are stronger than the cohesive forces. That's why the fluid will try to spread over the solid surface. Full stop. For wetting fluids, the angle of contact will always be less than 90 degree. Less than 90 degree. You can draw the diagram.
you want. Alright, next लिखा है इसमें, for pure water and clean glass the angle of contact approaches nearly zero. Right, next one, non-wetting fluids. So let if we are defining here, so it's obvious in this case, that is cohesive forces are greater than adhesive forces. It's obvious, when the cohesive forces are stronger, then these liquid molecule will try to contract itself, and this force is less. That's why this whole system will be combined, and this will not spread over the solid surface. So in this case, if you are taking an angle that is tangent and inside angle like this one, so for this one theta, so theta will always be greater than 90 but less than 180 degree. Alright, so that's the definition. No? Yes, mercury. Mercury is the example of non-wetting fluid. Why 90? 90 टाइम पे देखो आप फ्लूइड कैसा दिखाई देगा आपको, बॉक्स कभी देखा है? नो, दिस इज नो चांस. राइट, देखिए इसमें क्या, इन केस ऑफ नॉन वेटिंग फ्लूइड्स, the cohesive forces are stronger than the adhesive forces. That's why the fluid will try to contract itself. Example, mercury. And also yes, ये आपके पास 180 डिग्री भी नहीं हो सकता. क्यों? 180 डिग्री केस में क्या होगा? वेटिंग कैसे होगा? जहां देखो 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? Is exactly a point contact, perfect sphere. All right, it's a perfect sphere in that case. There's only point contact. That's why the tangent and the solid surface have the same line. This is not possible in case of liquids. All right. हाँ, सॉलिड होता है तो हम बात कर सकते हैं कि लेट अगर हम बात करें बॉल बेयरिंग्स की, बॉल की, उसको मैं किसी सॉलिड सरफेस पर रख दूं, देयर इज अ पॉइंट कांटेक्ट. राइट, बट इन केस ऑफ लिक्विड नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी. राइट, सो क्या, इन केस ऑफ मर्करी एंड ग्लास, in case of mercury and glass, the angle of contact
the angle of contact is in between 130 to 150 degree, is in between 130 to 150 degree. Alright?